Thank you so much for being with me on Tuesday as well. Hats off to your consistency. And thank you for understanding that progress does not stop even on working days. Because little steps can keep your confidence growing. Welcoming you all to our 22nd day of daily vocab session. So, working days are not for rest but for small or large wins. Exactly. Learning 5 words today would be your small win today, and building your vocab power would be a large win. Stay connected with my YouTube page, Learn with Symbol. So, starting our today's vocab words. Word one is amity. Amity does mean friendly relations. Dosti ya dostana talukat. Synonyms में the words we have are friendship, harmony या फिर accord. Amity जो word है that is used for good relations or friendly relations. और इसके antonyms में we have the words which are opposite of the friendship, alliance and friendly relations. तो इनके opposite जो words हैं these are hostility, hostility के अलावा conflict and disagreement. Then look at the sentences. In the sentence, we have the treaty aimed to build amity relations, amity between two nations. It means the peace agreement between the two countries was actually aimed at creating friendly relations between them. Then we are having ambivalence. Ambivalence does mean mixed feelings or uncertainty. It means the kafiyat in which we are doubtful or we are not able to take a decision. Doubt, indecision or uncertainty. Dohri kafiyat, confusion. These are the synonyms. Similarly, antonyms में we have certainty, conviction, अश्योरेंस यानी कि श्योरिटी होनी चाहिए डिसीजन की. सेंटेंस के अंदर वी कैन सी द यूसेज एज वेल. शी फेल्ट एम्बिवेलेंस अबाउट चेंजिंग जॉब्स means she was not sure about choosing the jobs and she was unsure actually about her skills, okay, whether to choose this job or whether to choose that job. तो इस तरीके से when doubt is there then we use the word ambivalence. So when a doubtful situation is there and when you are unable to take one decision, then the situation is called ambivalent situation. Nextly, ameliorate. Ameliorate is a word that means to improve or to make something better. To improve, to enhance, to upgrade, बेहतर बनाना या सुधारना. These are the synonyms of the word ameliorate. इसी के साथ साथ अगर एंटोनियम्स में देखें तो we have the words like to worsen, to aggravate या to deteriorate. सेंटेंस के अंदर इसका यूजेज अगर हम देखें तो the new policies aim to ameliorate poverty. इसकी मीनिंग होगी कि जो न्यू पॉलिसीज हैं दीज आर एम्ड एट इम्प्रूविंग द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी. अब इम्प्रूविंग द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब यही है कि टू इराडिकेट पॉवर्टी. अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि पॉवर्टी बढ़ा देना. इट मीन्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ पॉवर्टी. बिकॉज पोवर्टी तो एक नेगेटिव वर्ड है और जब नेगेटिव वर्ड को हम इंक्रीज करेंगे देन वही इट मीन्स के वही वर्सन द सिचुएशन. बट यहाँ पे जब हम नेगेटिव चीज़ को इराडिकेट करेंगे उसको हम कम करेंगे देन वी मूव टुवर्ड्स द बेटरमेंट. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द वर्ड एम्लियोरेट. आई होप यू गॉट द सेंस के हाउ वी यूज़ द वर्ड. The next word is amenable. Amenable does mean open to suggestion or willing to cooperate. To cooperate, to be cooperative, to be agreeable, responsive, farmavardar.
राजी होना. These are the these are the meanings of the word amenable. अब ज़ाहिर सी बात है कि ओपन टू सजेशन और विलिंग टू कोऑपरेट. जो बंदा विलिंग टू कोऑपरेट या रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो स्टबर्न है, रेजिस्टेंट है, अनकोऑपरेटिव. अब वो थोड़ी सी बात पे चिढ़ जाता है. इन वर्ड को देखकर एमिनेबल के एंटोनियम्स भी हम टिक कर लेंगे. अब सेंटेंस भी क्वाइट सिंपल है. यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट द सेंस के हाउ टू यूज द वर्ड. For example, he is amenable to change and feedback. It means that he is very cooperative and he welcomes suggestions and feedback. उसके बाद we have amenity. Amenity is a word that means a useful or pleasant facility or feature. सहूलत or we can say आराम सहूलत, comfort, convenience और facility. बहुत सिंपल सा वर्ड है. एंटोनियम्स हमारे पास है इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट या सेंटेंस के अंदर वी हैव टू सी द यूसेज एज वेल द होटल एज मॉडर्न एमिनिटीज. इट मीन्स के द होटल हैज मॉडर्न फैसिलिटीज, कंफर्टेबल आरामदायक सहूलतें हैं होटल के अंदर. विद दिस वर्ड एंड दिस मीनिंग we are ending our day 22 of daily vocab session. And if you are feeling stuck anywhere with any word, so feel free to contact me on my Facebook page or my Instagram page, along with my YouTube comment section box. Keep connected with us. If you have not liked, share, and subscribed the video, go there and click the subscription button. Stay connected with us. Thank you so much, and Nada Hafiz.